मेल आया, उसमें बोल रहा है क्विक इंटरव्यू बट नीड 11+ एक्सपीरियंस। कहाँ से लाऊंगा 11 years एक्सपीरियंस? An example of routine navigational. बट यार कितना पास था ये यहाँ पे और वो बिल्डिंग यहाँ पे। हमने काफी सारे प्रोजेक्ट कर चुके हैं जो ये लोग अभी एक्सप्लेन कर रहे थे हमें। How I use AI tools or ChatGPT to build a project. Problem has given me on my interview. I wanted to test ChatGPT to review it and rate it in the scale from 1 to 10. Okay guys, so I got ready and here is my full outfit. मैंने अपना full outfit का वीडियो ऑलरेडी शॉर्ट्स में अपलोड किया है, so do check it out. I'll keep the link in the description box. अभी हम लोग जाएंगे मीटअप के लिए। वहाँ पे एक्चुअली मीटअप स्टार्ट होने वाला है 5:30 को, बट हम लोग पहले ही जा रहे हैं बिकॉज आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर सम कैफेज नियर डाउनटाउन। सो हम लोगों ने एक प्लेस डिसाइड किया है विच इज द हेनरी, जो कि आई गेस 5-10 मिनट दूर ही है वो बिल्डिंग से जहाँ हमें जाना है। आई एम लाइकिंग माई आउटफिट विच इज सो क्यूट एंड ये इयररिंग्स पे अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है मेरे टॉप को। सो या दिस इज माई फाइनल लुक एंड आई एम लविंग इट। सो चलो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गो। अभी एक्चुअली कैब का आने के लिए 5 मिनट बाकी है, सो वी आर वेटिंग फॉर द कैब एंड देन विल लीव। Right now we are in the Henry Cafe and मेरा पूरा वो बिगाड़ दिया। I'm gonna taste my caramel. मैं क्या तो आज सही तो है, मतलब हाँ मीठा नहीं है, बिल्कुल मीठा नहीं है। आजकल है ना लिंक्डइन पे मैसेजेस आ रहे हैं लाइक रिक्रूटर्स जो कि रिमोट, आई गेस दे आर वेंडर्स, दे बेसिकली हैव क्लाइंट्स बट दे हायर पीपल हु वांट टू डू कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स, बट उसमें भी ये लोग एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। पता मुझे आज एक और मेल आया, उसमें बोल रहे हैं क्विक इंटरव्यू बट नीड 11+ एक्सपीरियंस। कहाँ से लाऊं मैं 11 years एक्सपीरियंस? पता नहीं मार्केट में क्या ही हो रहा है। मैंने इसको लिख के भेजा कि मेरे पास सब कुछ है जो फील्ड को चाहिए, मेरे पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी है हेल्थ केयर का, बट इसका रिप्लाई का वेट कर लेना। And one more, I had one more call with the vendor and even she said like they have clients and I had an interview with that guy as well. I'm waiting for the response. Let's see. That's the large latte. It's okay, आपको ही पता था. It's fine, it's my friends. तभी मेरा मीठा था। मैंने अपोलो की कॉफी पी ली और मैं देखना चाहती हूँ कि अपोलो कैसे पिएगा ये कॉफी, क्योंकि कॉफी बहुत ही कड़वी है। ये देख मेरे क्या क्या मैंने बोला ना उसको, मैंने बोला भी कैरेमल डालने के लिए। ये टेस्ट करा अच्छी है, मतलब जैसे मेरे को पसंद है वैसे, या कम मीठी और कड़वी। अभी हम लोग जा रहे हैं मीटअप में। एक मिनट गाइस, लुक एट दिस कार, पूरा कवर करके जा रहा है। तो हम लोग निकल चुके हैं अपनी मीटअप वाले बिल्डिंग के लिए, उधर अमित पड़ाको। एनीहाउ
लोग जहाँ पे थे वहाँ से 5 मिनट का रास्ता था, बट पता नहीं गूगल मैप ने क्या किया और वो सीधा उल्टे दिशा लेके गई। हम लोग वापस वहाँ से यहाँ चल के आए एंड नाउ वी हैव रीच्ड द डेस्टिनेशन। This is an example of Rudy's navigational skills. नहीं, आई हैव अ गुड नेविगेशन स्किल। नहीं है तुम्हारा। कैलेंडर से डायरेक्ट उसने फेच किया है लोकेशन, मेरी गलती नहीं थी, उसने, मैंने बस वही फॉलो किया जो उसने इसलिए भाई टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होता है। यस, ये पता नहीं गूगल मैप ने बहुत बार किया है मेरे साथ ऐसा। Still It's better than okay. Apple Maps, bro. हाँ, yeah. Anyhow, we have reached and पूरी शक्ल में पूरा पसीना आ चुका है। Let's go and attend. सबसे पहले कुछ खाना भी है, भूख लगी है। So guys, this meetup happens monthly in Dallas and was held in collaboration with PMG, which features insightful tech talks, great food, and plenty of networking opportunities. We started with check-in, enjoyed some food and drink. वैसे तो वेज में ज़्यादा options नहीं थे, like we had just fruits and some cakes, but non-veg वालों के लिए they had plenty of options. So after eating, we had the chance to network with fellow AI enthusiasts as well as directors, founders, and developers, which helped us expand our network. Then the event kicked off with a warm welcome and some updates about our AI community. So every meetup we have tech talks related to AI. So this time we had 3 speakers. So first we had Jason Hartley from PMG, who discussed about personal and practical ethics in the era of AI by sharing insights on how to build and maintain ethical frameworks and tips for sustainable AI practices. Then we had Ramdeepa Karanjai, who was a Google developer expert, and he covered about rapid prototyping using Gemma and production deployment in Vertex AI. And then we had another person from PMG who was Brent Schneeman, I hope I'm pronouncing correct, and he presented on automating the creative process with LLMs by showcasing how PMG uses tools like Google's Gemini LLM to generate and refine creative ideas. And then the evening ended with an open discussion and mixture, allowing us to continue conversation and network further. ओके गाइस, सो हम लोग अभी मीटअप से जाके हम लोग को बहुत भूख लगी। गाइस मीटअप काफी अच्छा था, हम लोगों ने इस बार सबके साथ फोटोज खींची। यहाँ पर वो है भाई साहब यहाँ पे हम लोग सब ये पीछे बिल्डिंग है। तुम्हारे पास भी फोन था, तुम लोग भी यूज कर सकते थे, ठीक है ना, मेरे पे चढ़ो मत तुम लोग। बट यार कितना पास था ये यहाँ पे और वो बिल्डिंग यहाँ पे, हम लोग पता नहीं कहाँ गए थे, कहाँ से आए थे। अच्छी यार। Anyhow guys, I was saying कि मीटअप बहुत ही अच्छा गया हम लोग का, और हमने बहुत सारे कनेक्शंस बनाए और सबसे बात भी की। I'm gonna make a post on LinkedIn as well, so I'll just post about it. And अभी हम लोग को, मेरे को काटी रोल खाने का मन कर रहा है, तो we'll just go there. लास्ट टाइम भी हम लोग यहाँ पे आए थे और हमने काटी रोल खाया था, so इस बार भी जाएंगे और वापस खाएंगे क्योंकि अच्छा था। अमित ने खाया जम के। फ्री का खाना मैं हाँ वहाँ पे वेज नहीं था, वरना मैं भी खा लेती। और ऑर्गेनाइजर जब ये कह रहे हैं कि भैया खाने आओ, यस एक्चुअली बट बहुत अच्छा लगा सबको मिलके एंड सबसे जान के। बट हाँ, द ओनली डिफरेंस वाज कि उन लोगों के पास जॉब था, हमारे पास जॉब नहीं है अभी। नहीं कर सकते हैं। हाँ, बट यार पता है हम लोगों ने रियलाइज किया है कि हमने काफी सारे प्रोजेक्ट कर चुके हैं जो ये लोग अभी एक्सप्लेन कर रहे थे हमें। गाइस मैंने चना मसाला रोल ऑर्डर किया। लास्ट टाइम मैंने अचारी पनीर ऑर्डर किया था, वो अच्छा था, बट मेरे को डिफरेंट आइटम है। हाँ अंग्रेज था। लेट्स सी हाउ इट इज। बहुत भूख लगी है मेरे को तो। The next day. Okay guys, so I wanted to share it with you regarding how I use AI tools or ChatGPT to build a project. Like I do it for my interview prep purpose, but you can use it for your final year project or for your learning purpose as well, and also for your resume. You can see the prompt on the screen. Also I will mention in the description box, so you can copy and paste it on your ChatGPT. And before showing, I wanted to say कि prompt बहुत important है guys. Like अगर आप अच्छे से prompt use करोगे, so the AI will generate like more relevant and more accurate information according to your need. So prompt is like a key
to get the more accurate information. Never mess with your prompt and use it effectively. So let me open my ChatGPT and show you guys. Okay guys, so now I have opened ChatGPT and I'm just gonna copy my prompt and paste it over here. And you can also modify the prompt. Like over here I have just written like, can you give me an end-to-end data science project with a business problem and data set. But here I'm gonna make small change like data science project in healthcare domain, so that I can do some project regarding like healthcare data set and their business problem. So when I hit the enter, you can see that it has given me the title, and here is the predicting patients readmissions to reduce hospital cost, and it has provided the business problem, and it has given the objective, and it has given the data set link. Like over here I have observed this thing, like I have done multiple projects and ChatGPT like अगर वो Kaggle का data set provide करता है, so I am not able to open it. But what I generally do is I just copy this data set and I open Kaggle and paste it over here. So you can find the data set over here as well. So here is the data. I think this is the data which ChatGPT has provided. You can compare it with this feature. In Kaggle, some data set have description, but here it don't have description, but you can see the columns over here and you can identify whether it's the same data or not. And this is the project workflow. Like usually what I do is I just see the business problem and the objective, and then I go through the data set which has provided. For the project workflow, I don't directly see the project workflow. I try to solve it by myself. Like I try to test my knowledge on this. Like if this problem has given me on my interview, I wanted to test like कि मैं ये कैसे solve करूँगी that time. So I just take my note and just write down the step which I follow. And if you are beginner and if you don't know how to do it, you can just follow the project workflow which ChatGPT has given. Like it has given the step like first you need to understand the problem and the object definition, what it's trying to say. And ChatGPT has already mentioned like over here for your clarification. Then as usual, your next step is the data pre-processing and the EDA, which is data analysis, basically a visualization for your data, what kind of graphs you want and how you visualize your data and what kind of models you have to use. So model building, how you're gonna divide your data into training and testing data sets, and which model will be perfect for your data set. And then you can use like you can select your model by evaluating it. I guess in the project section that is more than enough for your final year project, but if you want to do deployment, you can do more research on how you can deploy this project. And this is the documentation. Like data science में documentation and reporting is must. अगर आप college students होगे, so you will know कि at the end you need to submit the document and the report for your whole project. I guess even in the real world you need to have the documentation ready. So this is like next thing which I do. Like after doing my model evaluation, I don't usually deploy my model, I just evaluate my model and I try to write a report on it and I try to create a presentation, because correct me if I'm wrong in the comment section, if we want to explain our solution we need to create a presentation. So it's better to have a practice on creating presentation as well. So usually what I do is I create a presentation and write a document on the project which I have done, and I say ChatGPT to review it and rate it in the scale from 1 to 10, and I ask like how I can improve it or what it needs to be done. So it gives the clarity like what I need to work on and where I'm lagging. And if I stuck somewhere, I just follow the step. Okay, in this it hasn't given the code. Sometimes ChatGPT gives the code as well, and if not, if you're beginner, you can just say can you help me in implementation, and it will just provide you the code. First you need to set up your environment, and then you need to explore like basically your pre-processing data, and if you need feature engineering to improve your model performance, you can do that as well. And these are the things which you usually do. So if you're a beginner, you can just follow this. And not only that, if the data set is Kaggle ka, you can just go to code and you can see different people ka code and you can see what they have done. Some people have just like partial plots, like they have just done the EDA, and you can follow through their code like what they have done. ChatGPT has also given the model deployment, so you can just follow that step as well. So yeah, this
this is how I do. If you have any other doubts related to this, you can comment down below. I'll try to reply to you guys. I know I haven't been replying previous comments as well, but I'll make sure that I'll try to reply to each and every comment from this vlog or this video. So yeah, I guess that's it for this video. If you're liking this series, please do subscribe and share it with you. Please do like this video and also don't forget to hit the subscribe button. I'll just end this video over here. See you until next time. Bye bye.